After Bengal, it appears there's Khela Hobe in Tripura. Why suddenly is the northeastern state on the boil with political face-off between BJP and TMC? A TMC leader, Sayani Ghosh, has been taken into arrest. The TMC MPs are protesting outside Home Minister Amit Shah's residence. What precisely is this agitation about? Take a look first at this story. त्रिपुरा में गुंडागिरी क्यों चल रहा है? अमित शाह जवाब दो। Dharna, violence, late-night arrests, a Bengal script playing out in neighbouring Tripura, and the Trinamool Congress Bharatiya Janata Party showdown this time spills over to the national capital, Delhi. TMC MPs showed up at Home Minister Amit Shah's office. After initial claims of being turned away, a meeting took place between the Home Minister Amit Shah and the Trinamool Congress members of Parliament. But this after the TMC MPs staged a dharna, refusing to budge from the North Block. After the cage, Madhumita बातचीत किया, हमें जो बोलना था वो बोला, हमारे मेमोरेंडम देना था दिया। गृह मंत्री बोले हैं कि हिंसा नहीं होगा, सायनी घोष में वो जांच पड़ताल करेंगे, आगे देखा जाए। TMC Supremo Mamata Banerjee has also touched down in Delhi. The Chief Minister lashed out at the BJP, saying there is anarchy on the streets of Tripura. থানায় যখন বসেছিল পুলিশের সামনে থানায় গিয়ে বটি কাটারি নিয়ে হামলা করা হয়েছে, আমাকে শাওনি নিজে বলেছে। আমি কালকে ফোন করেছিলাম। ভোট ওরা যে এটাই হচ্ছে, বিজেপি রাজ্যে ভোট হয় না, ওরা বিজেপি ভোটের নামে ঘোট করে। তারা ভয় পাচ্ছে বলেই তো এটা করছে, পাবলিককে বিশ্বাস করতে পারছে না। So what has triggered this Delhi showdown? A scuffle broke out between the Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party workers in Agartala on Sunday ahead of the local body elections due to be held on November 25th. TMC Youth Congress chief Sayani Ghosh was arrested for allegedly trying to mow down BJP workers at a public meeting on Sunday. The Trinamool Congress on its part said she was attacked by the BJP goons when she was taken to a police station in Agartala. The law and order situation in Tripura is very grave. वो अच्छे दिन लाना चाहते थे ना, तो हमको पता हो रहा है त्रिपुरा में क्या अच्छे दिन चल रहा है। त्रिपुरा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। वहाँ जो हो रही है कानूनी मामला, तो कानूनी ढंग से उसको सुलझाया जाए। कौन क्या क्या है, पुलिस ने केस की, उनको बुलाया, पूछताछ किया, उसके बाद अरेस्ट किया है, वो तो कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार की हिंसा को वहाँ लेके जाया जा रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव और बंगाल की जो राजनीति और इस परिस्थिति बनी है, पूरा देश को जानता है, और उसी प्रकार बात करते हैं, वहाँ जाके लोगों को धमकी दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। The Trinamool Congress is firing from all corners and has also moved a contempt plea in the Supreme Court now that is scheduled to be heard on Tuesday. The fight is heating up in Delhi and Agartala. If Mamata is in Delhi, her nephew Abhishek Banerjee finally touching down in Agartala. কালকে সায়নী ঘোষকে অ্যারেস্ট করেছে কেন? রাস্তায় যেতে যেতে বলেছে খেলা হবে। আরে আপনার প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে খেলা হবে বলেছে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এসে খেলা হবে বলেছে, বিজেপির যত বহিরাগত নেতা মধ্যপ্রদেশ গুজরাট সব বাংলায় এসছে, আর কি বলেছে খেলা হবে। তাহলে তাদের গ্রেফতার করা হবে না কেন? The stage is set for a showdown next week in the winter session of the parliament as the Trinamool Congress making it clear they will not back down in this political tussle. With Shreya Chatterjee in New Delhi, Bureau Report, India Today.